Hello my dear students. Today we will learn more about sense of touch. What do you mean by sense of touch and which sense do we use when we touch anything? Do you know about this? Have you ever wondered how we feel any touch? How we feel the touch? We feel the touch through our skin. Our skin helps us to feel the touch, and skin here is the sense organ, and the sense that we use is touch. So let's begin the reading of this paragraph. The skin is the largest organ in the human body. It helps us to feel the things that we touch. What they're saying, skin is the largest organ in the human body because our whole body is covered with a skin, okay? And it helps us to feel the things that we touch. Skin helps us to feel the things that we touch. Why? How and why skin helps us to feel the things that we touch? They are saying when we touch an object, the nerve endings in the skin send signals, information to the brain. Okay, so here is an answer that why when we touch an object, how do we feel that touch? Okay, how do we feel it? How do we sense it? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, when we touch an object, the nerve endings, I have told you, what are the nerves? Nerves are the bundles of fibers present in your body and they form a network, huge network, okay? And nerve endings here means, nerve endings are the end of the nerve cells that receive messages from parts of the body and sends it to the brain. Okay, so these nerve endings are the end of the nerve cell. Nerve cells जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्या होते हैं, जो एंड होते हैं, ये रिसीव करते हैं मैसेजेस. कहाँ से रिसीव करते हैं? हमारी पार्ट ऑफ द बॉडी से. जैसे स्किन आपने टच करा, ओके, तो अब स्किन से ये मैसेजेस नर्व सेल्स कैरी करेंगे कहाँ तक? ब्रेन तक, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा? ये जो सिग्नल होता है, ये जो उसके बाद ये नर्व सेल्स क्या करते हैं? दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, ओके. देन व्हाट आवर ब्रेन डू? द ब्रेन डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ द सिग्नल्स. ब्रेन क्या होता है? ब्रेन अंडरस्टैंड करता है मीनिंग. हमारी ब्रेन जो है वो अंडरस्टैंड करता है किसका? जो भी इंफॉर्मेशन आती है नर्व सेल्स के थ्रू, वो डिटरमाइन करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि इस सिग्नल का मतलब क्या है. फिर वो डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ, स्टिकी और स्लिपरी, वेट और ड्राई, सॉफ्ट और हार्ड एंड सो ऑन, ओके. अब हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज चला गया. कहाँ, कैसे चला गया? थ्रू नर्व सेल्स. फिर हमारा ब्रेन डिटरमाइन करेगा इस मैसेज को, अंडरस्टैंड करेगा इस मैसेज को, इस सिग्नल को, इस इंफॉर्मेशन को, और फिर डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट कोल्ड या फिर कोल्ड है, स्मूथ है या रफ है, स्टिकी है या स्लिपरी है, या वेट है या ड्राई है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है. Some parts of the body such as fingers, toes and lips are more sensitive than others because of the presence of many nerve endings. कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी की, जैसे कि हमारे फिंगर्स, ओके. जब भी आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ कभी कभी छूते हैं तो क्या होता है? आपके फिंगर में से ब्लड आने लगता है. या फिर एकदम से आप किसी गलत जगह पे स्टेप कर लेते हैं, है ना, पैर रख देते हैं, तो क्या होता है? द ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम योर टोज, ओके. या फिर आप अपना लिप्स कभी बाइट कर लेते हैं, व्हेन यू च्यू योर फूड, तो क्या होता है? आपके लिप्स में से ब्लड आने लगता है, ओके. योर लिप्स स्टार्ट्स गिविंग आउट द ब्लड. सो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव देन अदर्स. ये पार्ट्स जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. किस वजह से सेंसिटिव होते हैं? ये इसलिए सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग्स, बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. सो हेयर आई एम शेयरिंग अ वीडियो क्लिप विद यू so that you will understand the sense of touch more clearly, okay. This will help you in clearing the concept of sense of touch. Let's see the video. Going to focus on the sense of touch. First, let's answer this question. What sense organ do we use to touch the objects around us? Our skin. We use our skin to feel the objects around us.
Can you tell us how our hands help us? The skin is the covering of our body. It helps us to feel the texture of things. Our skin makes us feel if the object is hot or cold, smooth or rough, soft or hard. Let's have first the hot and cold things. Here are the examples of hot objects. Coffee, fire, rice, soup, and iron. Here are the examples of cold objects. Ice, ice cream, snow, air conditioner, and refrigerator. Next, let's have the smooth and rough objects. Here are the examples of smooth objects. Glass, mirror, egg, and plate. Here are the examples of rough objects. Rock, log, jackfruit, and sandpaper. Now they are saying we should avoid touching things that may harm us. Okay, हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, जो कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो चीज़ें हमें हार्म पहुंचा सकती हैं, हमें तकलीफ़ दे सकती हैं, है ना. तो क्या हैं वो चीज़ें, लेट्स लर्न अबाउट देम. We should not touch hot utensils with bare hands, especially those in which food is being cooked. हमें कभी भी हॉट यूटेंसिल्स, ठीक है, गर्म बर्तनों को नहीं छूना चाहिए. कैसे? अपने बेयर हैंड से, विदाउट ग्लव्स और विदाउट द हेल्प ऑफ क्लोथ्स और विदाउट द हेल्प ऑफ होल्डर्स. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, गर्म बर्तन होगा या फिर हॉट यूटेंसिल होगा तो दैट विल बर्न आवर हैंड. इसलिए हमें ऐसे बर्तन, ऐसे हॉट यूटेंसिल्स को नहीं टच करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हॉट हों, टू प्रिवेंट आवर हैंड्स फ्रॉम बर्निंग. ओके. सेकेंड पॉइंट इज वी शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर, कटर एंड सिजर्स. वी शुड अवॉइड टचिंग किचन नाइफ्स और ब्लेड्स. ओके. सो हेयर दे आर सेइंग हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना चाहिए. कब? जब वी आर हैंडलिंग एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. ओके, दैट इज़ हैविंग एनी शार्पनेस और दैट इज़ हैविंग द pointed nib. For example, your compass, needle, okay, like paper cutter, scissors. इन सबको हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए ताकि हम इससे अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाएं. ओके. और हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए किन चीज़ों को छूने से, जैसे कि किचन नाइफ्स या फिर बहुत ज़्यादा जो ब्लेड्स होते हैं उनको हमें नहीं टच करना चाहिए. The third point is we should never touch electric sockets or appliances. We should never switch on a fan or a bulb with our wet hands. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स या अप्लाइंसेस, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो होते हैं, जो स्विचेस होते हैं हमारे घर में, जो बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, उन्हें हमें कभी भी नहीं टच करना चाहिए बेयर हैंड से, या फिर स्पेशली व्हेन आवर हैंड्स आर वेट और व्हेन वी आर वेट, व्हेन आवर बॉडी इज़ वेट, जब हम गीले होते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल राइट आफ्टर टेकिंग अ बाथ, डू नॉट टच द सॉकेट्स. ओके, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, फॉर एग्जांपल योर रेफ्रिजरेटर और योर माइक्रोवेव ओवन और एनीथिंग दैट इज़ रनिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें शॉक लग सकता है. तो प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम शॉक यू शुड अवॉइड टचिंग दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके. वी शुड नॉट टच सम प्लांट्स लाइक कैक्टस, पॉइजन आइवी एंड स्टिंगिंग नेटल. ओके, हमें ऐसे प्लांट्स जिनके पास कांटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, पॉइजन आइवी एंड स्टिंगिंग नेटल, इन सब में क्या होता है,
कैक्टस में वी हैव द कांटे जो होते हैं हमारे पास थॉर्न्स होते हैं, ओके। या फिर स्टिंगिंग नेटल में होता है एक छोटे छोटे वाइट कलर के, उसमें भी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फिंगर में फिंगर पेयर्स हो सकती है और उससे वो हमारे ब्लड निकल सकता है। या फिर पॉइजन आवी, इसमें वो होता है पॉइजनस प्लांट होता है कि तो कैक्टस हैज थॉर्न्स विच कैन हर्ट अस। टचिंग अ स्टिंगिंग नेटल कॉजेस अ स्टिंगिंग सेंसेशन एंड टचिंग पॉइजन आइवी मेक्स अ स्किन इची। अगर हमारे पास जैसे कैक्टस के पास थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, टच स्टिंगिंग नेटल के पास क्या होता है, एक स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, वाइट कलर के छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे किसी ने काटा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे बी काटती है, हनी बी काटती है, तो हमें जैसे तब फील होता है वैसे हमें स्टिंगिंग सेंसेशन होगी अगर हम स्टिंगिंग नेटल को छुएंगे। या फिर पॉइजन आइवी में क्या होता है, पॉइजन आइवी हैज़ दिस कैपेसिटी टू मेक योर स्किन इची। आपकी स्किन में खुजली होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी, या फिर रैशेस पड़ जाएंगे इफ़ यू आर टचिंग पॉइजन आइवी। So this is all about page number 16. I hope you will read the chapter carefully. Thank you.